A cheerful good morning and a very warm welcome to one and all present today in this science class. Once again, I welcome you back on behalf of Sunbeam Academy. Moving ahead with our today's class, the very first thing which I would like to share is the same things which we have been continuously discussing over the last about to become over last 1 year. Okay, approximately going to be 1 year within just 2 to 3 months. So, as per the COVID situations, that is, if you would have gone through the newspaper, so children are going to get vaccinated by October. I hope so. Either July, August, or October. So, I hope you can have a clear idea, or you can just guess some of the dates which can be your for resuming of your normal classrooms, or maybe the next session is going to be the same sessions as it used to be earlier. Okay, so starting with this, as we have already started with our chapter, so I don't think there is much to discuss over this. The only good part is that in the last 24 hours, approximately 13,000 cases have been recorded along with 10 or 20 deaths. So this is really a good sign. That is, most of us recovery is much more better as compared to other things. Death rate basically the death rate is very less, whereas our recovery rate is very fast. Okay, as we used to do it regularly, starting with our syllabus. So if you remember, yesterday also I told you regarding the same things, that is, we are going ahead with this natural disasters, and most probably either today or tomorrow we are going to complete it. And since we will be able to complete this part, so after that we'll be starting with our revision, as we have lots of chapters, that is 4 chapters to revise, and at the same time including the diagrams of periodic test 2 as well. Okay, so starting with this, right, starting with this, yesterday we have discussed about the natural disasters, basically your okay. Today we have to start with cyclone. Just a little glimpse of what we have done in the previous classes. So since we have already started, we studied what are the changes which are going on in our environment. As a result of these changes, we are facing some or the other natural disasters which is occurring. Not only that, started with our first natural disaster, that is your earthquake, followed by that is the sudden vibrations, or the that is movements which occur inside the earth's surface, which results into the vibrations occurring on the surface of the earth. These vibrations are known as your earthquakes, resulting in the loss of damage, property, lives and everything, as each and every natural disasters has this part common. ठीक है, आप देखोगे कि कोई भी नेचुरल डिजास्टर है, वो चाहे अर्थक्वेक है, चाहे सुनामी है, साइक्लोन है, और वोल्केनिक eruption है, कुछ भी है, in each and every cases you are able to find that there is always loss of life as well as property. Okay, so in this case we have discussed, that is, in the case of earthquake only, as shaking of the earth surface occurs, so either two things can occur, that is, either it can be your avalanche or your landslides. Avalanche being the movement of the large masses of snow, whereas landslides being the large masses of land which starts falling from a mountain or from anywhere higher above the level of the earth or the ground. Case study here. So in April 2015, a severe earthquake struck Nepal, whereas a study of earthquakes is known as seismology. Scientists, seismologist, instrument to measure it, seismograph, scale known as Richter scale. 1 to 2 cannot be hardly felt or cannot be felt. 3 or 4 can be felt. Above 7, that becomes your dangerous here. Okay, just because of these, some of the modernization, or basically the technological development, we are able to predict, or we are able to reduce the damages which can be caused as a result of these natural disasters. ये जितनी भी technologies
का डेवलपमेंट हो रहा है, दिन प्रतिदिन हम कहीं ना कहीं आगे ही बढ़ रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट, नो डाउट रिगार्डिंग दैट, कि हम हमेशा क्या है, ठीक है, एनवायरनमेंट को हार्म करके ही हम अपनी कुछ न कुछ टेक्नोलॉजी या नई चीज़ें लाते हैं, ठीक है। ऐसा कहीं नहीं है कि हम इको फ्रेंडली तरीके से कुछ काम करें, बट स्टिल पीपल एज वेल एज द साइंटिस्ट एंड एवरीवन, they are trying to develop some or the other methods which not only increase our technological advancements, which not only increase our technological success, but at the same time they also take care of the environment as well. Okay, starting with this, that is after the earthquake, when it occurs, there can be some kind of shocks or tremors which is going to occur. So these tremors, they occur within hours or even days after a strong earthquake. What to do when an earthquake occurs? Run out of your house or a school building immediately and move to an open area. Okay, जैसे ही आए, ठीक है, सबसे पहले अपने घर से बाहर निकल जाइए, बिल्डिंग से, हर जगह से, ठीक है, ओपन एरिया में रहिए, जिससे कि अर्थ ही खाली फटेगा तो आप कुछ ऊपर से गिरने के कुछ भी चांसेस नहीं रहेंगे, खाली जो सरफेस ऑफ द अर्थ है वही क्रैक करेगा, तो वहां से आप थोड़ा बहुत बच सकते हैं. ओके, स्टार्टिंग विद दिस, डू नॉट, प्लीज ट्राई टू फॉलो the drop cover and hold on principle. Okay, and at the same time, starting with volcanic eruptions, as the temperature of these molten lava which is coming out, is it very hot or very much? So wherever they are going, that is the soil or the nearby areas or the plants or anything, they completely get buried up under this, and when they get solidified on cooling, they remain submerged or they remain buried under those rocks only. Okay, in December, then we have studied about the tsunamis, that is the high waves of water, speed around 800 to 900 kilometers, and the height can be here 20 to 30 meters. Okay, now in December 2004, a tsunami destroyed life and property in 11 countries along the Indian Oceans. Kerala, Odisha, Assam, Andaman and not Assam, Tamil Nadu, Kerala, Andaman and Nicobar Islands. These are those places which are very near to our Indian Oceans or other oceans, as a result of which, since oceans or the seas, they are most probable places where the tsunamis occur. So the nearby areas get affected the most. Okay, tsunami over. Flood, yesterday only I told you, when heavy rainfall occurs during the monsoon, as a result of which there is rise in the level of rivers, and when there is rise in the level of the rivers, the low-lying areas or the nearby areas, they start getting submerged. I gave you some of the examples related to Samne Ghat as well as other areas of Varanasi as well. Assi Ghat also I told you. What are the situations, what is the scenario at the time of your flood. Okay. Okay, now it's time for cyclone. Okay, let us start with this cyclone here. Okay, the picture has not been given. Okay, let me first explain you this part. A scene of a flood, if you can see here, that is from where this water has come, we don't know. Okay, but this entire the green color or the soil color which you are able to see, that is nothing but your water which is getting filled each and everywhere. Okay, from where this water is coming we don't know, but if you are able to see, all the trees, lands, crops, houses, roads, buildings and everything, whatever things are present there, they all get waterlogged, they all get we cannot say submerged, ठीक है, डूब नहीं जाते हैं, ठीक है, पानी में, बल्कि वाटर लॉगिंग हो जाती है, इनके आसपास चारों तरफ क्या होता है, पानी इकट्ठा हो जाता है. एंड सिंस वाटर लॉगिंग occurs, it is very difficult for the people to come out of their houses. And if you belong to Samne Ghat, or if you have any one of your friends of Samne Ghat, so you can ask to those peoples that a situation also comes when they have to live on their first floor or on the terrace for some period of टाइम. कभी कभी ऐसे सिचुएशंस भी आ जाते हैं कि उनके बेसमेंट में, उनके ग्राउंड फ्लोर्स में पानी भर जाता है और उन्हें ऊपर जाना पड़ता है कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए, कि जब तक वो पानी वापस न चला जाए. ओके, स्टार्टिंग विद दिस साइक्लोन. स्टार्टिंग विद साइक्लोन, इट इज अ स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म ओवर अ सी और एन ओशन. अब देखिए,
जब बहुत तेजी से हवा, आंधी आप कह सकते हो, स्टॉर्म इज बेसिकली स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म और बेसिकली हवा, ठीक है, जब बहुत तेजी से घूमने लगे, आ जाए, ठीक है, कहाँ पे आ जाए, वेदर इन अ सी और एन ओशन, इट इज अकम्पनीड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हेवी रेनफॉल इन कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज मतलब हिंदी में इनको तटवर्ती इलाका बोलते हैं, ठीक है, एरियाज इज इलाका, वेर एज कोस्टल मतलब नियर द कोस्ट, दैट इज योर तटवर्ती, तट मतलब किनारे, वर्ती मतलब मोस्ट प्रोबेबली शायद पानी के किनारे, या फिर कोस्टल एरियाज यही बोलते हैं उनको, तटवर्ती इलाकों में। सो होता क्या है कि बहुत तेजी का हवा आंधी टाइप का आ जाता है, एंड दिस ओरिजिनेट्स इन द ओशंस और द सी। अब आपको भी पता है कि ओशंस या सीज में जब वेव्स चलते हैं तो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट ओनली द मूवमेंट ऑफ वाटर, बट इट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर एज वेल एज एयर. So here also, when the cyclone occurs in the storm or a sea, this usually occurs by strong winds and heavy rainfall in coastal areas. These strong winds cause high waves in the oceans or the seas and destruction of land, while heavy rains cause flooding in coastal areas. अब देखिए दो तरफ से डिस्ट्रक्शन होता है. पहला, तेज हवा की वजह से जितनी भी वेव्स होंगी वो बहुत ही हाई उठेंगी, और जब वेव्स हाई उठेंगी तो क्या होगा, ठीक है, वो लोग नियर बाई एरियाज को क्या करेंगे, हिट करेंगे तो डैमेज करेंगे, डिस्ट्रक्शन ऑफ लैंड हो सकता है, एंड एट द सेम टाइम जब हैवी रेनफॉल भी उसी के साथ हो रही है तो फ्लडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, जैसे मैंने फ्लड पढ़ा ही है, क्या है फ्लड, मानसून में जब ज़्यादा पानी बरस जाए, मानसून नहीं है फिर भी अगर ज़्यादा पानी बरसेगा तो ऑफकोर्स इट इज गोइंग टू कॉज फ्लड ओनली, ऑलराइट. So here also, that is in the case of cyclone, not only the water from the sea or the oceans it is going to affect us, but the other things, like your what do we call to that, extreme rainfall, it is going to cause the flooding in the nearby areas only. Okay, so both the situations, the high tides as well as the low tides or the high tidal waves is pushing the water to the nearby areas, and at the same time the heavy rainfall is affecting the coastal areas as well. Okay, now in both the cases the damages are caused to nearby coastal areas only. If you remember, I have told you, whether it is the flood or it is the tsunami, each and everything when they come across सी या ओशन में कुछ होता नहीं है, ठीक है, सब खाली होते हैं, खाली पानी ही होता है, ठीक है, तो उनके पास टकराने के लिए कुछ भी नहीं होता है. तो जैसे जैसे वो शोर से, घर से, पेड़ से टकराते हैं तो उनकी स्पीड्स कम हो जाती है. जब उनकी स्पीड कम हो जाएगी तो उनके डैमेज करने के चांसेस भी कम हो जाएंगे. इज दैट क्लियर? Scientists forecast cyclones by analyzing information from satellites and radars. In such a case, a warning is issued so that we can prepare and take precautions. Now see, here it is, that is scientists forecast cyclones. ठीक है, जैसे scientists और सारे natural disasters को predict कर लेते हैं. Forecast मतलब एक prediction लगा लेते हैं कि हाँ ये हो सकता है, इतने देर में earthquake आ सकता है, flood आ सकता है, ये हो सकता है, वो कुछ भी आ, ठीक है. तो ठीक उसी तरीके से साइक्लोन्स में भी सैटेलाइट्स के थ्रू, रेडार्स के थ्रू कुछ ना कुछ प्रेडिक्ट, एक आप कह सकते हो प्री इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है कि ये एरिया हिट कर सकता है फ्लड से, अर्थक्वेक से, सुनामी से, वोल्केनिक इरप्शन से, किसी भी चीज़ से. और उस वार्निंग इशू होने के बाद, ठीक है, पीपल क्या कर सकते हैं, या हम लोग अपने आप को तैयार कर सकते हैं, या कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं. Okay, now what are the precautions which we have to take? That is when a flood or a cyclone occurs. Now see, these are the common precautions which are being taken, whether it is the case of a flood or it is the case of a cyclone here. Okay, तो चाहे flood हो चाहे cyclone हो, दोनों केसेस में हमें क्या करना है, ऑलमोस्ट सेम ही प्रिकॉशंस हैं. ठीक है, अपने आप को आप जैसे बचा सकते हो बचाइए, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशंस होती हैं, ठीक है, कि देखिए कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे आपको शेयर करना चाहूँगा कि जब इमरजेंसी आती है या फिर जब कोई डेंजर आता है तो सबसे पहली चीज़ जो बंद करता है वो आपका दिमाग. ठीक है, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है और उसी में आप कुछ गलतियाँ कर बैठते हो. ओके, लेकिन अगर आप
बहुत ज़्यादा देर तक अपने दिमाग से सोचना भी चालू करोगे तो भी आपके लिए हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तब तक वो बहुत सारे डैमेज कॉज कर सकता है, आप बच नहीं सकते हो, मर सकते हो। तो मरना तो दोनों केसेस में है। So why not to give a little time to your brain and think cleverly and or think in a clever manner, that is wisely, and at the same time take some of the proper initiatives, proper precautions, proper steps which is going to save you from one or the other natural disasters, चाहे वो कोई भी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अर्थक्वेक में अगर उसने बोला है कि हाँ टेबल के नीचे ड्रॉप डाउन एंड कवर वाला जो रूल है हमारा, ठीक है, वो अप्लाई कर देंगे तो टेबल के नीचे आप छुपे हो, टेबल के ऊपर कुछ गिरेगा तब पर भी आपको चोट लग सकती है। कोई नहीं जानता है कि कब डेथ हो जाएगी, कब क्या हो जाएगा, हम नहीं जानते हैं, बिकॉज वी डोंट नो। ईच एंड एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय सम और द अदर थिंग्स। और अगर देखा जाए तो हमारी बिलीफ क्या है कि ईच एंड एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द गॉड ओनली। तो हमें नहीं पता है कि हम कब मरने वाले हैं, हमारे साथ कल क्या होगा। तो जिस चीज़ के बारे में हमें पता ही नहीं है, वाई टू बी वरीड अबाउट इट। द ओनली थिंग इज दैट वी हैव टू बी पॉजिटिव। Okay, think about the best possible situations, think about the best possible solutions, okay, so that because that is only going to save us from this natural disaster or from that pandemic situation। ठीक है, आपके रोने से, गाने से, हड़बड़ाने से कुछ नहीं होने वाला है। okay, the only thing is that you have to take some proper precautions, proper steps, think wisely and act accordingly। all right, starting with this, let us start with the very first precaution which we have here is, that is I'm sorry, during a flood or a cyclone, do the following: listen to the radio or watch television regularly for warning and advice। ठीक है, अब पहली चीज, जब भी साइक्लोन आएगा, ठीक है, या फ्लड आएगा तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो जाती है। ठीक है, जनरली चांसेस यही रहते हैं। फिर भी अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है या रेडियो है, सो प्लीज डू कनेक्ट योर सेल्फ, अपडेटेड योर सेल्फ विद द न्यूज एंड द वार्निंग्स एंड द एडवाइसेस विच आर बीइंग गिवन ऑन द रेडियो और ऑन द टेलीविजन। ओके, नॉट ओनली दैट, वी शुड कीप इनफ स्टॉक्स ऑफ फूड एंड फ्रेश वाटर। ठीक है, हमें अपने आप को रेडी रखना चाहिए अगर ऐसा कुछ सिग्नल्स या ऐसा कुछ डेंजर हमें पता चल रहा है। So we should keep ourselves ready with proper amount of food as well as fresh water, because during the flood or the cyclone, the water gets contaminated. Okay, as lots of waste materials, they get mixed into fresh water, and this water becomes is not fit for drinking or does not remains potable. Okay, potable water means drinking water or the water which can be drunk। okay, now apart from that, okay, keep a first aid kit ready for an emergency। ठीक है, फूड हो गया, वार्निंग्स हो गया, एडवाइसेस हो गए, अपने आप को अपडेट रखिए। आफ्टर दैट, कीप अ फर्स्ट एड किट रेडी फॉर एन इमरजेंसी। ऑल्सो कीप अ रेडियो, टॉर्च, मैच बॉक्स एंड कैंडल्स हैंडी। एक फर्स्ट एड किट तैयार रखिए इमरजेंसी के टाइम के लिए, एक रेडियो रखिए, एक टॉर्च रखिए, मैच बॉक्सेस रखिए और कैंडल्स रखिए। ये सब ऐसी जगह रखिए कि आप बस वो डब्बा उठाइए और आपके पास सारी चीज़ें तैयार रहें और आपको लेकर के बस तुरंत निकल जाना रहे। दैट इज नोन एज बेसिकली योर इमरजेंसी किट और फर्स्ट एड किट, आप कुछ भी बोल लीजिए उसे, जिसमें बेसिक चीज़ें हैं। मैच बॉक्स, आपको पानी गर्म करना है, खाना बनाना है, चाहिए ही चाहिए। कैंडल्स, रोशनी के लिए, मे बी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज नॉट देयर, ओके, इन दैट केस। ऑल्सो कीप अ रेडियो, टॉर्च एंड मैच बॉक्सेस। रेडियो एंड अ टॉर्च, रेडियो फॉर द warnings and the advices, torch so that you are able to walk during the nights if the cases becomes too harsh or it becomes too worse conditions arises in that case। okay, next is, if there is a cyclone warning, do not go into the sea, move to a safer place such as cyclone shelter if necessary। ठीक है, अगर साइक्लोन वार्निंग मिलती है तो आप सी के पास जाके उसका इंतजार मत करिए या देखिए मत कि हाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ट्राई टू मूव टू अ सेफर प्लेस इफ पॉसिबल एज द साइक्लोन शेल्टर, और मूव लिटिल बिट अवे, दैट इज 200 to 500 meters or even 1 kilometer ahead of that area, because it is not going to
remain there और it is not going to cause damage up to longer distances, क्योंकि जैसे जैसे उसको hindrances मिलेगी उसकी स्पीड कम होती जाएगी और वो वीक होता जाएगा and finally it will get finished off. Okay, so this was all about the cyclone. Moving ahead with the next we have here is that is your drought. अब देखिए ड्रॉट एक सबसे बड़ी समस्या है हमारे लिए खास करके. ओके, व्हाई? बिकॉज इंडिया इज अ एग्रीकल्चरल लैंड. द बेसिस ऑफ द इकोनॉमी और द एंटायर इकोनॉमी ऑफ द कंट्री डिपेंड्स ऑन दिस agriculture only. Since the since the economy of India depends on the agricultural produce, that is 50 to 60% of the economy is from your agricultural sector only. So it is our humble duty to think of the environment. अगर हम environment के बारे में नहीं सोचेंगे तो we are going to suffer very much. कैसे सफर करेंगे? आपको भी पता है कि पहले के जो टाइम्स थे, या आप अपने पापा मम्मी से पूछिए या अपने दादा दादी से पूछिए, so in their times basically these things were happening at a very much particular time interval. सब चीज़ों का एक डेफिनेट पीरियड था, मॉनसून का, विंटर का, समर का. कोई ऐसा नहीं था कि हाँ कोई बहुत एक्सट्रीम है, कोई बहुत लॉन्ग है, मतलब समर्स हैं तो बहुत ज़्यादा कड़ाके की मतलब गर्मी है, ठंडी है तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी है, ऐसा नहीं रहता था. ठीक है, सब कुछ नॉर्मल थे, उतने ज़्यादा न हार्श कंडीशंस थे, न नेचुरल डिजास्टर्स थे, न नेचुरल कैलामिटीज़ थी, ना ही इतना ज़्यादा सूखा पड़ रहा था या भूखमरी थी, आप कुछ भी कह सकते हैं. ड्रॉट्स इज बेसिकली नथिंग बट योर सूखा. एंड सूखा why does it occurs? Because when the rainfall does not occurs for a longer period of time. ठीक है, ड्रॉट्स का डेफिनेशन यही है कि अ पीरियड ऑफ नो रेनफॉल और वेरी लिटिल रेनफॉल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. जैसे साल 2 साल तक अगर कोई बरसात नहीं हुआ, ठीक है, बेसिकली हमारा अंडरग्राउंड वाटर जो है या रिवर्स ओशंस में पानी कहाँ से आ रहा है? ठीक है, कुछ आइस ग्लेशियर से आ जा रहा है, नहीं तो बाकी तो रेनफॉल ही है. तो अगर रेनफॉल ही नहीं अकर करेगा, ठीक है, तो पानी कहाँ से आएगा? हमारा अंडरग्राउंड का वाटर लेवल जो है दैट इज गोइंग डीपर एंड डीपर डे बाय डे. ठीक है, अगर एक चीज़ और मैं चाहता हूँ आप लोग इसको पूछिए, मैं जो भी बोलता हूँ प्लीज़ ट्राई टू connect yourself with your parents over these matters. They will be able to explain you in a very much better way. ठीक है, आपको अभी लगता है कि नहीं नहीं ये कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो लोग मुझसे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा सकते हैं. कैसे? बिकॉज दे हैव फेस्ड दो सिचुएशंस. उन लोगों ने देखा है वो सारे कंडीशंस, हम लोगों ने पढ़ा है, कुछ मैंने भी देखा है, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर कर लेता हूँ. कुछ उन्होंने भी देखा है, सो दे विल ऑल्सो बी एबल टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस विथ यू. ओके, अब आप उनसे पहला तो ये पूछ लीजिएगा कि आप लोग के टाइम पे रेनफॉल कैसे होता था, क्या इतनी ही ठंडी पड़ती थी या इतनी ही गर्मी पड़ती थी, ऐसे कुछ. ठीक है, दूसरी चीज़ आप पूछिए कि आप लोग के टाइम पे वाटर का लेवल क्या था. ठीक है, कि पानी कहाँ से लेते थे आप लोग? तो बेसिकली वेल से होता था, नल से होता था, हैंड पाइप्स थे. ठीक है, तो उनका वाटर लेवल क्या था, मतलब अर्थ के सरफेस के कितना नीचे था पानी का लेवल. ठीक है, तो दे विल टेल यू दैट इट वाज अराउंड 50, 100 या इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा या कम. तो आपको ये पता चलता है ना कि उस समय वाटर का लेवल क्या था, 100, 50, 80. ठीक है, अब देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे पेरेंट्स लोगों का वाटर लेवल यही है, बिकॉज द वाटर लेवल और द अंडरग्राउंड वाटर लेवल बेसिकली डिपेंड्स ऑन आवर लैंडस्केप एज वेल. कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया थोड़ा सा अपर लैंड पे हैं, ठीक है, कुछ लो लाइंग एरियाज में हैं. तो लो लाइंग एरियाज में वाटर लेवल और जल्दी मिल जाता है, हाई एरियाज में माउंटेन्स पे वाटर का लेवल काफ़ी नीचे होता है. तो नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट वाराणसी एज वेल, ठीक है, सामने घाट वगैरह के साइड आपको वाटर लेवल थोड़ा सा ऊपर मिलेगा क्योंकि बगल में गंगा जी हैं, रिवर है, तो इस वजह से अंडरग्राउंड वाटर काफ़ी अच्छा रहता है. It keeps on getting recharged as you move away from the ghats. जैसे जैसे आप घाट से दूर होते जाएंगे आपके वाटर का लेवल बढ़ता चला जाता है, मतलब और डीपर एंड डीपर इट गोज.
So in my areas, if we talk about, that is the DLW or Meroli regions. So here the water level is 150 to 180 fits, but most of the people who are doing the bore wells or anything like that, आजकल जितने लोग भी सबमर्सिबल्स लगवाते हैं, they used to go for 300 fits. Okay, 300 फिट नीचे तक जाते हैं और वहां तक अपनी बोरिंग करवाते हैं, ठीक है, पाइप्स डाल देते हैं कि उन्हें फ्यूचर में फिर दोबारा वो प्रॉब्लम्स ना झेलनी पड़े. सो अगर आप सोचिए कि पहले के लोग एक कुआं दो कुआं होता था, उस एक या दो कुएं से पूरा का पूरा गांव पानी इकट्ठा मतलब यूटिलाइज करता था और सबका काम भी चल रहा था. अब क्या होते हैं, हर घर में बोरवेल है, एक घर वाला 300 फिट किया, बगल वाले ने भी 300 फिट किया, उसके बगल वाले ने भी 300 फिट किया है. तो क्या है, ठीक है, दिस इज द मेन रीजन फॉर द डिक्रीज इन द वाटर लेवल ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर. ओके, so these are the things which should be taken care of, otherwise it is going to cause a lot of damage to us. ठीक है, हमें अभी नहीं समझ में आ रहा है. अगर आपने न्यूज़पेपर्स पढ़े होंगे तो जैसे आपको ये बोला गया है कि by 2024 each and every house will be having a water connection. ठीक है, 2024 तक हर घर में वाटर का कनेक्शन होगा. वाटर का कनेक्शन किस लिए होगा? देखिए, अब वाटर का कनेक्शन का बेसिक रीज़न क्या है. पहली चीज़, बोरवेल्स के नंबर कम हो जाएंगे, आपको टाइमली पानी मिलेगा तो आप थोड़ा सा जुडिशली यूटिलाइज करोगे. ठीक है, कंटिन्यू 24/7 आवर्स आपके पास पानी रहता है तो आप क्या है, एकदम निश्चिंत रहते हो. जब मन करता है लेते हो, जब मन करता है गिराते हो, जितना मन करता है उतना हम मिस यूज़ करते हैं पानी का. तो अगर जब हमें टाइमली मिलेगा, ठीक है, हाँ, सुबह 2 घंटे पानी आएगा 6 से लेके 8 बजे तक, शाम को दोपहर में 2 घंटे आएंगे, शाम को 3 घंटे 4 घंटे आएंगे, तो क्या रहेगा, हम बहुत ही कॉशियस रहेंगे. हम उसी टाइम पे अपने सारे कंटेनर्स फिल करके रख लेंगे, टंकीज भर लेंगे, टैंक्स भर लेंगे. सो दिस इज गोइंग टू सेव सम अमाउंट ऑफ वाटर. ठीक है, जितने भी वाटर टैंक्स हैं हमारे वाराणसी में, ठीक है, जो नगर निगम जल निगम के हैं, ठीक है, तो जल निगम इज बेसिकली द वाटर अथॉरिटी है शायद, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, वही है, या वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो भी है. तो इनका काम है पानी सप्लाई करना पूरी की पूरी सिटीज़ में. ठीक है, अब नाउ व्हेन यू विल बी हैविंग अ वाटर कनेक्शन एट योर होम्स, सो जस्ट लाइक यू आर पेइंग फॉर योर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, यू विल हैव टू पे फॉर योर वाटर बिल एज वेल. ठीक है, वाटर टैक्स या वाटर बिल भी देना पड़ता है एज कम्पेयर्ड, जैसे कि आपका ये हाउस टैक्स या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है. दो the water tax is very very less, around 8 or 9 rupees और basically 30 rupees कुछ ऐसे ही करके पर मंथ है. ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, but that teaches us one very important thing, that is how to have a judicious use of the resources, especially the water, which is a matter of concern. क्यों matter of concern हम बार बार बोलते हैं या water conservation strategies के बारे में बार बार पढ़ते हैं? क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि 70% ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विथ वाटर. ठीक है, 30% में ही ये पूरी की पूरी इंडिया है या फिर जो भी आप कह लीजिए, बाकी सब तो पानी ही पानी है. तो 30% 70% पानी है, फिर भी हम वाटर का शॉर्टेज फेस कर रहे हैं. वाई? दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द मिस यूज, ओके, और द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एज वेल थ्रू आउट इंडिया. जो मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि खाली हम मिस यूज ही कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पे बहुत ज़्यादा पानी है, कहीं पे बहुत कम पानी है. सो दैट इज ऑल्सो द रीज़न फॉर अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, स्पेशली द रीजन्स नियर योर राजस्थान. ठीक है, वहाँ पे बेसिकली डेजर्ट्स हैं, सैंड है, एंड सैंड इज नॉट गोइंग टू होल्ड वाटर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द वाटर गोज below the surface of the earth very quickly. Okay, so this was there for today. The last part which we have here is, that is your droughts. Okay, थोड़ा सा introduction मैंने आपको दे ही दिया है, काफ़ी कुछ दे दिया है. Tomorrow we are going to complete with this chapter, and most probably we will be starting with the question answers and everything. Sorry. All right.
So here it is. That is, this was all for today. Please have a thorough reading. If you have any problems, please do share it, in your query sessions window. Okay. So that's all for today. Take care. Take all the necessary precautions for a few more months till you get vaccinated. And at the same time, have a superb day ahead. Thank you.